Hello students, this is class 10th English and today's poem is When You Are Old. It is written by William Butler Yeats. Let us read the poem. When you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once, and of their shadows deep. How many loved your moments of glad grace, and loved your beauty with love false or true. But one man loved the pilgrim soul in you, and loved the sorrows of your changing face. And bending down beside the glowing bars, murmur a little sadly, how love fled and paced upon the mountains overhead, and hid his face amid a crowd of stars. So this is a very beautiful poem. Let us read it as a line by line translation. This is the pick of Maud Gonne, the poet's beloved. Here we are having it. The poem is actually addressed to Maud Gonne, the poet's beloved, who never responded to Yeats' love. The poem has been taken from The Rose. It is the anthology of poems by William Butler Yeats, and it is addressed to Maud Gonne. Now, when you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down this book. The poem is set in future. The poetess is still young, but she does not respond to the love of the poet. Now, the poet addresses the poetess, addresses the beloved of him, saying that when you will turn old and you will realize the truthfulness of his love. Here, when you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down this book and so slowly read and dream of the soft look your eyes had once, and of their shadows deep. Means, one day you will get old and your silky hair and gleaming eyes, which are your biggest gifts of this day, will lose all the merit. The hair will turn white and the eyes will get tired and feel sleepy. The fire of your beauty will cool down and you will be keeping close to the chimney to get warmth. You will definitely be feeling loneliness. You will hence take my book, The Rose, in your hands, and you will start reading it slowly, word by word. This book will help you dream of your glorious moments. You will surely recall the days when your eyes had soft look and deep shadows. How many loved your moments of glad grace, and loved your beauty with love false or true, but one man loved the pilgrim soul in you, and loved the sorrows of your changing face. You will start recollecting the men who would keep around you in your happy moments of glad grace. They would love you because of your grace and physical charms. It is known to you whether their love was true or false, but you will get to know that at least one man loved you for your inner beauty. He loved your pure heart. He kept loving you even when your face started sprouting wrinkles.
He kept loving you even when you started losing your pants. And bending down beside glowing bars, murmur a little sadly how love fled and paced upon the mountains overhead and hid his face amid a crowd of stars. In your old age, while sitting near the fireplace, you will bend towards the chimney and will get more closer and will start whispering to yourself how love deserted you and distanced itself from you. You will think that love has fled and took its route towards high altitude mountains, and finally it has hid its face amid the crowd of stars. You would have then only regret that you didn't keep your promise for true love and lost it forever. So this is the literal meaning of this poem. Let us translate it in Urdu. कुछ बच्चों के लिए ज़्यादा जो इस पोइम को अच्छी तरह से समझना चाहें, यह नज़म मॉडगॉन को मुखातिब करके कही गई है। मॉडगॉन शायर की महबूबा थी, मगर उसने कभी भी शायर के प्यार को कबूल नहीं किया। ये प्यारा सा नगमा यीटिस की तरफ से उसकी मोहब्बत का भरपूर इजहार है। तो पहले स्टेंजा ऐसा आएगा, फिर एक दिन ज़रूर आएगा कि तुम बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारा एक एक बाल सफ़ेद हो जाएगा और तुम्हें हर पल नींद की तलब होगी। तुम्हारा कमज़ोर जिस्म अंगीठी का सहारा लेता होगा और खुद को गर्म रखता होगा। अकेलेपन को दूर करने के लिए तुम आखिरकार मेरी किताब हाथों में लोगी और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू करोगी, और मेरी किताब आपको ख्यालों की उन वादियों में सैर करवाएगी जहाँ तुम्हें अपनी आँखों की खूबसूरती और उनकी गहराइयाँ और परछाइयाँ याद आएंगी। तो दूसरा स्टेंजा देखते हैं। तुम्हें अपनी जवानी के दिन ज़रूर याद आएंगे जब तुम हुस्न की एक सच्ची मूरत थी, और याद आएगा कि कितने लोग तुम्हारी खूबसूरती की वजह से मोहब्बत का इजहार करते थे। क्या पता उनकी मोहब्बत सच्ची थी कि झूठी, मगर एक शख्स था जो तुम्हारी सूरत से नहीं बल्कि तुम्हारी सीरत से मोहब्बत करता। और जब तुम्हारी खूबसूरती कम होती गई और तुम्हारे चेहरे का रंग बदलता गया और तुम्हारे चेहरे की झुर्रियाँ भी अब पूरी तरह उभरने लगी, वो फिर भी तुम्हें मोहब्बत करता था। आखिरी बात देखते हैं। तुम ये सोचते हुए उस तपती हुई अंगीठी की सलाखों की तरफ फिर से झुक जाओगी जो इस अंगीठी में अब शोले उठाते होंगे। फिर आह भरोगी, तो आह भरते हुए फिर मायूस होकर खुद से ही बातें करते रहोगे और कहोगी कि पता ही नहीं चला कि मोहब्बत के पार आ गई और ये उड़ती गई पहाड़ों के ऊपर से बहुत दूर सितारों की जुर्मत में, और इन चमकते हुए सितारों के पीछे बहुत पीछे कहीं पर ये मोहब्बत आखिरकार खुद को छुपाती गई, और इस तरह तुम्हें खोई हुई मोहब्बत की याद आएगी। तो यहाँ अब we are having some poetic techniques used in this poem. And first poetic technique is what is the rhyme scheme of this poem. And rhyme scheme, let us have a brief look upon it. We are having in the end sleep, then book, look, deep. Sleep ए लीजिए इसे, बुक को बी मानते हैं, लुक को भी बी मानते हैं, डीप को ए मानते हैं, तो इसकी राइम स्कीम है ए बी बी ए। फिर और चेक करते हैं, ग्रेस को सी मानते हैं, ट्रू को डी मानते हैं, यू को फिर डी मानते हैं,
फेस को सी मानते हैं, सी डी डी सी। तो इसकी राइम स्कीम है ए बी बी ए या फिर सी डी डी सी। तो ये इसकी राइम स्कीम है। एंड आफ्टर दिस देयर इज अनदर पोएटिक टेक्निक यूज्ड इन दैट इज अनाफोरा। अनाफोरा इज द रिपीटेड यूज ऑफ ए वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ 2 or more consecutive लाइन्स। दो मुसलसल लाइनों के शुरू में अगर एक ही वर्ड रिपीट होता है तो इसे अनाफोरा कहते हैं। जैसे हमारे पास है पहले हिस्सा में, एंड नॉडिंग बाय द फायर टेक डाउन दिस बुक एंड स्लोली रीड एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक। एंड नॉडिंग बाय द फायर एंड स्लोली रीड, ये अनाफोरा की एक मिसाल है। इस तरह हमारे पास आखिरी बंद में यहाँ मिसाल है, एंड लाउड द सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स। यहाँ फिर से अनाफोरा की मिसाल हमारे पास है, यहाँ एंड यहाँ और यहाँ भी है। तो ये अनाफोरा की हमारे पास मिसाल है। एंड वी आर हैविंग एलिट्रेशन। एलिट्रेशन तो मुसलसल दो वर्ड एक ही लाइन में आते हैं जो एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हों, तो उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन यहाँ एक बार आई है, तो आखिर की तरफ यहाँ हम देखते हैं एलिट्रेशन, एंड हिट हिज, हिट भी ह साउंड से, हिज भी ह साउंड से, ये यहाँ एलिट्रेशन आई है। इसके अलावा हमारे पास है पूरी एक पोइम, ये विजुअल इमेजरी है। वेन एवर वी रीड दिस पोइम वी गेट एन इमेज दैट कुड बी परसीव्ड विद आवर आईज, इट इज कॉल्ड विजुअल इमेज। द होल पोइम इज epitome of visual imagery. Then we are having personification. When we assign human qualities to non-living things, we call it this personification. And here love has been personified, just like we will be finding here. यहाँ हमारे पास है how love fled, यहाँ पर्सोनिफाइड, कैसे मोहब्बत ने परवाज की। एंड इसी तरह एंड पेस्ड अपॉन द माउंटेन्स, कैसे ये चलता हुआ गया माउंटेन एज इफ इट इज ह्यूमन। देन हिट हिज फेस, जैसे मोहब्बत का कोई चेहरा है जो उसने छुपा रखा है। सो इट इज personification. And on the same way we are having whole poem, we are having another poetic technique, enjayment, when one line continues and gets into the second line. We are having it in the same all poem. When you are old and grey and full of sleep, then we are having and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and their shadows deep. The whole stanza is enjoyment. इस तरह हमारे पास दूसरा स्टेंजा भी है, यह भी enjoyment की एक मिसाल है. Just like we are having here, how love fled. This whole is enjoyment. So there is thrice the enjoyment technique used in this poem. Here again we are enjoyment. One line continues and it ends at the end of the another line. So these are the poetic techniques in the poem. Hope you would have enjoyed this poem and its reading, and you will for sure subscribe to my YouTube channel and will press the bell icon for my further videos on education. Thank you. Have a joyful day.